आइए अब हम थ्योरम 2 पर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो इस प्रकार है कि सॉल्व sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल्स 0। अब हम सॉल्यूशन देखें तो इट इज गिवन दैट sin 2x minus sin 4x plus sin 6x equals 0. If we rearrange it, we will get sin 2x plus sin 6x minus sin 4x equals 0. Let's use sin c plus sin d formula. We get 2 sin 4x into cos 2x minus sin 4x equals 0. This implies sin 4x into 2 cos 2x minus 1 equals 0. This implies sin 4x equals 0 or cos 2x equals half, that will be equal to cos pi by 3. By first and second theorem, this implies 4x equals n pi or 2x equal to 1 pi plus minus pi by 3. This implies x is equal to n pi by 4 or x is equal to n pi plus minus pi by 6, where n belongs to integer.